Hello friends, welcome back. This is Alam. I am from Jharkhand and as you know I am an English learner and this is day 19 of my 30 days English speaking challenge and today I am going to share why we are not able to speak English and what is the reason about not speaking English. So if you are watching this video, so please I request to you, please watch this video till end and comment me how do you feel after watching this video. Okay, because do you think in Hindi and then translate into English. कभी भी अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो स्टार्टिंग टाइम में आप ट्रांसलेट करो, नो प्रॉब्लम. ओके, बट जब आपको थोड़ा थोड़ा आने लगे ना तो बंद कर दो, आप शुरू हो जाओ इंग्लिश में सोचने के लिए. थिंक इन इंग्लिश, आफ्टर दैट थ्रो योर इंग्लिश इन फ्रंट द पर्सन्स. ओके, सोच लो, नो नीड टू be fear, no need to think about your mistake. Speak fluently and ask to them, my English is better or not? What should we learn in this time? Because I know I am not speak correct, but I want to speak correct like you. If you give me any idea, so definitely I will apply. Okay, and you can try to explain any topic in English. Okay, and most English learners have one common problem. They first think in Hindi, then they translate in English. Okay, so stop doing this and think directly in English. Okay, you can see around you and everything you have surround you, so you can try to make sentence in English surround your things. Okay, and if you are making mistake, so no need to think about it, and if you thinking first Hindi and translate in English, so you are making mistake and this is makes us solo and confused. Okay, so सोचना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है, वो मैं मानता हूँ, बट क्या है ना कि अगर आपको सीखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. भाई आज के ज़माने में इंग्लिश अभी आपको उतना समझ नहीं आ रहा है, बट इन फ्यूचर आपको इतना ही प्रॉब्लम होगा इंग्लिश ना आने की वजह से, तो आप खुद रियलाइज़ करोगे व्हाई वी हैड नॉट लर्न दिस लैंग्वेज, बिकॉज वी हैड टाइम एंड वी यूज्ड टू वेस्ट आवर टाइम अबाउट वाचिंग मूवी, स्क्रॉलिंग रील and playing gaming. Okay, so after few years later we will realize. Okay, so if you have time, so please start learning English. So stop think in Hindi and try to speak English. Example, मुझे भूख लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे भूख लग रहा है. आप डायरेक्टली आप सोचो इन इंग्लिश में. ओके, कैसे? आई एम फीलिंग हंग्री. ओके, अगर आप डरे हुए हो तो मुझे डर लग रहा है, ऐसा क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग स्कार, आई एम फीलिंग फियर. ओके, सो आप जितना अगर अपने आप को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग. सो हाउ टू स्टॉप ट्रांसलेट, हाउ टू स्टॉप ट्रांसलेशन. ये है ना, कोई भी सोचते कि भाई अभी मेरा कुछ आइडिया नहीं इंग्लिश में, तो मुझे इसे कैसे रोकना चाहिए. ओके, सो स्टेप 1, यूज शॉर्ट एंड सिंपल इंग्लिश सेंटेंस. स्टेप 2, name everything around you in English. Okay, and step 3, talk to yourself in English. So it is a good method for improve your English. So if you are watching this video, so please like and comment me how is my English and how should I improve my English and what is the reason behind you we are not able to speak. Okay, so you can comment me about your problems and I will try to make a video, because also I am learning this language and I have no environment, that's why I am making this video and I want to talk to all of through my English and definitely I will do and I will be a good English speaker if I will make video consistency. Okay, so please like and thank you for watching this video.